Okay, so Assalamu alaikum everyone. Welcome to the session that is being conducted for your benefit, and it is going to be an interactive session and informative session that where we will be talking about how you will be interviewed as a graduate once you enter the professional world. Okay. Before I continue, we would like to say that we are having this session in partnership with Career Pakistan's Top World program. Top World is a platform for professionals of action to spread their knowledge in the form of talk sessions and interact with students at their educational institutions. Top World now has over 600 plus established speakers on its panel, ranging from senior management of corporations, including CEOs, as well as country representatives of leading multinational NGOs and dignitaries, including ambassadors from 20 countries. The program has hosted talks in universities across Pakistan. Okay, now moving on. In today's panel, we have Mr. Zayad Chaudhry and Ms. Amna Mehkeri, who will be the moderator for the session. Briefly introducing both of the honorable guests right now. Mr. Zayad Chaudhry is a chartered accountant by profession and had started his career at PricewaterhouseCoopers, PwC, Pakistan. Presently, he is the country CFO and director at Novartis Pharma, Pakistan. He is leading country functional council that includes corporate treasury, finance, planning, and business service functions that provide services to all Novartis decisions. During the last few years, he has had various leadership and management responsibilities for business services and corporate platform functions for South Asian countries. He has enriching responsibilities, which has provided him with opportunities to lead various projects that involve significant change management, and he has also been awarded and recognized for his performance. Zayad contributed significantly to improve both productivity and profitability of the organization through these projects, which also involve the development of smart strategies, solutions, and analysis. And I'm actually in awe of the entire portfolio that I received, and that's like a very good portfolio, and I'm pretty sure that can help in giving us tips about how you can be analyzed as a potential candidate in any organization. Moving on, Sir Zayad has also been the trainer for learning and education program of PwC and is frequently invited as a speaker at various public forums. He also possesses a vast experience of training and coaching senior managers on finance topics. Zayad Chaudhry is an avid fan of gardening and farming, both fruits and vegetables and livestock as a hobby, also likes carrying his camera around. Respecting life and what it has to offer, including all living beings, helps keep him content and going. Moving on to the bio of our moderator, Ms. Barrister Amna Mehkeri. Amna is an LLM graduate from the University of Law. She has over 2 years of experience in the legal industry, having specialized in immigration, employment, property, and family law. Furthermore, she is also a content creator at Karachi Food Ventures for the last 4 years. Right. Now I'll move on towards handing this session to Ms. Amna so that she can start with the moderation and we can continue. Thank you. Thank you, Ruba, for such an amazing introduction, and good afternoon and assalamu alaikum to everyone who has joined us today. Thank you to Career Pakistan for organizing this Talk World program where experienced professionals come in and they help students improve their job prospects. I would also like to thank FAST University and Mr. Ziyad for being here today. Coming to the webinar itself, before we start, let me explain how you can communicate with us throughout this webinar. There's a chat box in which you can leave in your questions, and I will try to take them in throughout, especially towards the end if there's time and we have any leftover. We are going to start by observing mock interviews. So ये real interviews नहीं हैं, ये सिर्फ practice interviews हैं. And we have some students who have volunteered to take part in this, and they have been selected by their university to come in and join us today. जो भी आज होंगे हमारे साथ, please अपना कैमरा खुला रखिएगा. And after every interview, Mr. Ziyad will go over the do's and don'ts of your CV and your interview. And these interviews are specifically for mock
for entry level positions. तो fresh graduates के लिए हैं specifically. And you can select whichever entry level position you want to practice in. But all your questions will be general. कोई specific सवाल नहीं आपसे पूछा जाएगा आपकी field के हवाले से, आपसे कोई technical questions नहीं पूछे जाएंगे. Also, we are now going to start. So I believe we have Wajiha here, Wajiha Abdul Basit. Wajiha, can you open your camera, please? Do we have Wajiha? I think we can move on to Ajay then, if Wajiha is not here. Yeah. Okay. So Ajay, we have Ajay Kumar. Hello Ajay, are you here? Should we move on to Sameen? Yeah, I'm pretty sure I saw Sameen. Okay, Sameen, are you there? Hello, yes, I'm here. Hi, Sameen, can you please open your camera? Am I visible? I see you. Yes, you are. So Sameen, can you please give us a short introduction about yourself? Yeah, sure. Basically, I'm an undergraduate student in Bachelor's Computer Science, and I'm in my 8th semester right now. And I have drive this journey so far to this end, Alhamdulillah. And right now, obviously we are looking for an opportunity to practice our theoretical skills in a major platform. So yes, I think that's it. Okay, so it's over to Mr. Ziad to continue and conduct this interview. Right, Ji. So, Assalamu alaikum and a very good evening, all of you. Thank you very much for joining this session, and you can hear me well, right? Yes. Okay. So, thank you very much for joining this session, and thank you very much, Trader Pakistan, for having me here. And coming to the interviews, so Sameen, thank you very much for taking time to apply for this position, and highly appreciated. And also thanks for your interest in this organization. I would like to welcome you to the interview. And before we start, I would just like to briefly introduce myself. So my name is Yad Chaudhary, and I would be interviewing you for the position that you applied for. In terms of a beginner stage. So the point that I'm trying to make is that I would not be testing your experience while we are doing this interview. Rather, how you can join in and help take this forward from here. So it's an entry level position to be precise about it. And so I mean, before we start, I know that you already briefed a little bit about yourself, but that is something that I can find in the CV as well. So I would like to understand more about your interest and how you and your aspirations with respect to when you were applying for this position, and maybe a little bit about as in what you would like to add. So I leave it to you. Whatever you would like to add. Basically, I feel myself affirmative for this platform or this team because I am really active in the social circle of my university life and college life also. So basically, I was the part of major societies. Like currently, I am the vice chair of Asian Muses, and I have been general secretary of the literary club also. And I was an active member in other, you can say, team works like Procom, Developers Day, and Career Day in my university. So, and I have some extra skills about working on quality assurance as an intern in Affinity. So, that's why I think that I will be capable to be engaged in this team. Sorry, I can hear you.
So, thank you. Uh, let me go into a little bit of details, right? So I like your aspiration, right, and your thought process as in how you would be able to contribute. So आपकी लाइक नोइंग कि ये एंट्री लेवल पोजीशन है एंड जो मैं आपके सीवी से समझाऊं या जो व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी अबाउट के यू आर अ करियर ओरिएंटेड पर्सन राइट सो आपके एस्पिरेशंस भी होंगी so where do you see yourself in let's say the next 10 years time? After 10 years, like I see myself working as a project manager or something like that in a reputed company or multinational organization. All right. So क्या वो क्या की strengths होंगी जो कि आप समझती हैं आपको वहां पे लेके जाएंगी? I I mean something think that due to Yes, I think due to my quick learning skills and adaptability within an organization or within its, you can say within the environment. okay. I cannot I wasn't able to hear you. Okay, Was there let me. Actually, I was saying that I'm confident about it because due to my quick learning skills and I have the ability to adapt the environment within an organization or within a team. right? So and what are the things जो कि आप समझती हैं कि जहाँ पे you would need to develop further? Maybe something which you are not good at. I think I need to be really good in, kind of, uh, you can say leadership quality. You can say kind of uh, ruling ruling positions. So I need to be strong at that. Okay, and how do you say कि I mean what would you do differently to overcome those challenges or to develop yourself further in those areas? I think I would be seeking guidance of my leads or some, you can say senior employees for overcoming those challenges, especially while meeting my clients and some I can say peoples outside the organization. अच्छा मुझे एक बात बताएं you talk about leadership, you talk about collaboration and you say कि ये वो चीजें जो आपको आगे लेके जाएंगी and I fully agree with that. So I mean I like the approach definitely. एक बात मुझे बताएं कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है in your everyday life कि जब you are the only one pitching in for an idea and everyone is opposing that or and you didn't feel good about it. ऐसी कोई सिचुएशन कभी आई है कि आपसे सबने डिसएग्री किया हो बट you were strong believer of that idea? Yes, I have faced it very rarely uh, within the entire period of this university life. And in that case, I think I was being pressurized by the society, or you can say the people who were opposing my idea. Okay. But somehow I got the assistance of my, you can say, teachers or faculty members. You can say in a minority, but there was some assistance. So I was at least self-satisfied that my idea was approved or good to somebody. So what did you do to get their support or to sell your idea? क्या वो मेन एक दो चीजें हैं जो आपने की and then the people who were opposing were they then really believing in your idea या they were just following that because it kind of came from the top? What I think, if we want our idea to be, accepted by the audience, there are three main features. We need to be very descriptive about it. Like we need to elaborate each and every, you can say, stage of that idea.
that how is going to be implemented and how is going to be deployed. And secondly, we need to be concerned about the you can say audience that whom we are pitching our idea to, like whether they are interested or not. Because I have observed that if we are going to deliver a boring you can say political speech in front of my university students, they will obviously neglect it and they will not find it more interesting. But if we deliver a speech or knowledge about AI or something robotics, they will be more interested in it. So it depends upon our audience, our description, and our all future you can say future work, that how this idea is going to lead us in our future you can say future work. Right. Well, thank you very much. Changing the topic a little bit, when I look at your CV, so I also see, I looked at the interests that you have, और उसमें आपने mention किया है documentaries. So, कोई any particular achievement that you would like to name and talk about? Actually, I'm more towards the animal documentaries because I have a kind soft spot towards animals. So I'm more into that. Okay. All right. Well, good. So anything that you would like to ask me specifically? Anything? Any question? Sure. Could you please tell me that how your organization would stand from other team organizations in aspects of environment and you can say learning chances? Right. So we have a very dynamic organization, which of course promotes, which gives opportunities, and there is an opportunity to fail as well. That's the best part, that you can fail and still you would be encouraged to try again. So that actually means that we really encourage and appreciate innovation, and that is exactly why I wanted to check as in where you have pitched some ideas and brought some opposition, and then how were you able to deal with it. So basically it's all about bringing in new perspective, and that's what we highly encourage, appreciate, and also support. So yeah. Right, thank you so much. Thank you very much. Okay, so thank you, Samin. Mr. Ziad, what do you think were some of the positives that were there, and what do you think could be improved on a little bit to improve everyone else's experience as well? Right, I think see एक जो core चीज है और जिस पे I think towards the end also we are going to talk about a little bit कि an interview is not really questioning your knowledge and skills. वो आपके CV में नजर आ गया है. Of course when we look at the grades and everything, so we are aware about that, right? So definitely we trust the university, we trust the educational institute जो कि आपको grades दे रहा है. So of course it's not about testing your knowledge. जब आप real jobs में आते हैं, so उसमें what actually matters is the fact कि आप वो knowledge जो आपके पास है वो right time पे right तरीके से use कर सकें, and then you are able to deal with people, because you would face एक जो stark आपको difference मिलेगा stepping out right from the industry, right from the university to a job market would be कि university में सब लोग आपकी age के हैं, उनका thinking का process, thinking mindset सब एक जैसा है. But the moment you step into the real world, into a career, right? So आपका सबके perspective different होते हैं, और then you have to deal with them. So particularly what I liked and the positives in relation to this was the attitude. Of course, that was really positive. You were aware about the development areas right away. You did not have to think about them. आपको ये पता था कि आपने अगर leadership qualities, yes, I mean उसमें आपकी learnings हो सकती हैं कि how would you maybe improve in that area. Not necessarily हर चीज जाहिर है ये नहीं होती कि आप दूसरों से सीखते हैं, कुछ चीजें आप खुद भी और भी डेवलप करनी होती हैं. Maybe there are other possibilities to learn in the sense कि आप workshops attend कर सकते हैं, आप बड़ी अच्छी books पढ़ सकते हैं,
TED talks, and there are multiple things that you can do. So of course, these are the positives, right? And maybe something where a little bit job improve kar sake, because let me tell you, or frankly speaking, जो decision है hiring का, generally that happens within the first few seconds, right? So it's basically the first impressions which generally lasts, unless के dramatically कुछ ऐसी चीज हो कि वो change हो जाए. So I think so starting बड़ी powerful होनी चाहिए. चाहे आपकी physical meeting हो या फिर आप virtual meeting हो, in both the scenarios you can smile. Because that shows your confidence. You can greet in a very confident manner, or at the same time. But having said that, जो चीज मुझे इस सिनेरियो में अच्छी लगी और इसकी भी मैं अभी बात करना चाह रहा हूँ कि you should never give up actually. अगर आपकी starting इतनी powerful let's say नहीं भी थी, you missed out on something, right? So ऐसा होता है, मैं आपको बिल्कुल real life instance बता रहा हूँ जो मैंने कुछ candidates में भी in reality देखा है और खुद भी एक दफा experience किया है कि शुरू में कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ सोच के आते हैं कि जो है ना मैंने जाके यूं सलाम करना है, ऐसा इंप्रेशन बनाना है, मैंने बैठ के ये बात करनी है, और आप सडनली भूल जाते हैं. और फिर ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू आफ्टर फर्स्ट 1 or 2 क्वेश्चंस आपके जहन में आता है कि मैंने तो ये किया ही नहीं, एंड यू ऑलरेडी स्टार्ट फीलिंग कि यू वुड नॉट गेट दिस पोजीशन. आपने वो इंप्रेशन ही नहीं बना सके आप. सो इसमें द की इज कि जो लोग ये सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर वो बाकी they are not able to overcome. लेकिन if you keep on trying और आप ये कहें कि नहीं चलो ठीक है वो हो गया, doesn't matter, let's look forward, look ahead कि अभी भी जो part बाकी है उसमें how I can do even better. So that is I think the approach that you followed, or towards the end I can tell you it ended on a very good note, creating a good impression. कि जो questions थे वो properly responded थे. Maybe यार कुछ जगहों पे इसी तरह की जो मैंने बात की वहाँ पे you could have improved, लेकिन otherwise overall I think it was good. So yeah. Okay, anyone who's joined in, they can feel free to drop in their questions in the chat box and I can take them throughout. In this interview, Samin also spoke about Mr. Ziad's company, and he spoke about diversity and the kind of areas. But coming towards diversity in terms of hiring, how diverse do you think today's organizations are when they see a female or a male or a specific person with a different kind of need? How flexible do you think in today's time are employers? Well, I think, frankly speaking, there is a lot of opportunity to further improve. But if I take the yardstick and I say कि मतलब मैंने जो real world है, जो companies को around it has been almost 20 years जब से मैं देख रहा हूँ. So what I can tell you is कि we have come a long way. मतलब it's basically in terms of the environment, in terms of the opportunities, we have really excelled. जिन companies में मैंने पहले काम कर चुका हूँ मैं, और उन companies में उस वक्त let's say daycare centers नहीं थे, just example, right? Although when we talk about the diversity, it's everything. It's gender, it's religion, it's the mindsets, it's a lot of things. So, but if we talk about when it comes to encouraging the women or supporting the women to be able to work, तो उसमें जैसे पहले कुछ जिन ऑर्गेनाइजेशन से मैंने काम किया है उधर पहले डे केयर सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, बट नाउ देयर आर. और इसी तरीके से बहुत सारी और चीजें हैं, लाइक एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई मीन जो कुछ लोगों को अगर किसी कोई चैलेंजेस आ सकते हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया है. सो आई थिंक ऑन एन ओवरऑल बेसिस वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट देयर डेफिनेटली इज अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दैट इज बीइंग डन, और वो साथ साथ वी आर इंप्रूविंग दैट एरिया. प्लस एक चीज और है कि जो अब इन टर्म्स ऑफ द केपीआईज एज वेल, बेसिकली it's the organizations have set for themselves certain objectives to promote diversity and to encourage diversity. So
और उसी हवाले से like now with COVID the organizations have thought more about it और फिर तो flexible working hours और कुछ इस तरह के concepts जो पहले थोड़े से alien थे वो अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से merge होते जा रहे हैं and we are also benefiting from those. Okay, we have a question by Hasnain Khan in the chat box. He said that markets nowadays, they want someone with 2 to 3 years of experience for a job. And frankly speaking, there are very limited jobs for fresh graduates because I feel companies aren't willing to work with someone who's just finished and does not know the skills of working. So what should fresh graduates do in that scenario? They cannot get such a vast experience while studying. So how should someone like that approach this? Ashiji, that's a very interesting question, and frankly speaking, this was one of the challenges that I also faced in the beginning. अब मैं आप थोड़ा सा आपको बताता हूँ डिटेल. तो जो मेरा पहला सवाल जब मैंने समीन से पूछा था और जो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि I'll be interviewing for the position that you actually and this is the beginner's position for which you applied. So I was trying to make her feel comfortable कि इधर हम experience को नहीं देख रहे. We are going for fresh graduates. So generally जो corporates के training programs होते हैं वो इस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं कि वहाँ पे they are they are considering only the fresh graduates and not people who have some sort of an experience. लेकिन experience helpful होता है. I think it's I would. And now, having said that, I would also tend to disagree a little bit कि हर job में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे interview कि वहाँ पे experience चाहिए होता हो. It's from job to job it differs और बड़ा clearly वो stated होता है कि कहाँ पे experience चाहिए और कहाँ पे experience के बगैर a person can start. So I think एक तो ये दूसरा of course आप जो चीज कर सकते हैं और जो मैंने personally किया था कि while I was still in college, in the summer break whenever I got time, I used to just go and work for the organizations for free. Internship programs, formal internship programs वो नहीं थे, but I just used to request them, send in my CVs. 4 से 5 organizations से भेजता था एक आध opportunity मिलती थी even for 2 or 3 weeks, but उससे फायदा ये हुआ कि when I eventually went into the job market, I could actually say कि मैं इन organizations में काम करके आया हूँ, even though for a limited period, but वहाँ पे कुछ projects मुझे मिल गए थे. So this is something which you can always do, and I think all the organizations encourage that, appreciate that. Plus आपको मिल सकती है opportunity if you're willing to really मेहनत आपको करनी होगी definitely, और you will have to be willing to do that. So I think from that point of view, you can gain some mileage. Okay, so I think I just saw Ajay here. Hello, Ajay, are you here? Hello, ma'am. I am here. Assalamu alaikum. Yeah, walaikum salam. Can you please open your camera? Yes, ma'am. Yeah, great. So Ajay, can you give us a short introduction about yourself? Hello, ma'am. I am Ajay. I am from Faf National University and I am a CS graduate. I'm going to be a CS graduate. I have good expertise on Python and data science, and I have been working on web development also. Okay, so Mr. Ziad will now conduct your interview. Okay. Right, Ajay. So thank you very much for showing interest in this position, and thanks very much for joining. I will not go into the details of what kind of position this is, but I can tell you that this is an entry-level position where we would not be considering any experience, rather how you can manage the situations, and that is exactly what I would like to try to understand during my conversation with you. So just a brief introduction. My name is Ziad Chaudhary, and basically I'll be interviewing you. So you can ask me any questions that you would like. You can stop me in between. You don't have to wait for me to ask you to ask any questions if you have. You can stop me in between. आप जब मर्जी interrupt कर सकते हैं. Just feel free. Feel very comfortable. और जो भी बात हो, you can openly discuss with me in this interview. So now to learn a little bit more about you, since this is all about you, and to understand a little bit more, I would like to hand over the opportunity to you and maybe ask you कि अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं
something which is not there in the CV, something that you feel would help, convince us to offer you this position. So basically sir, आई मजे और मैं जो ना पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से आया हूँ जहाँ लोग मतलब पढ़ने के लिए कम निकलते हैं। कश्मीर से आया हूँ और उसके अलावा जो ना ये एक चीज होती है जो मतलब आपको एक दूसरों से अलग करती है कि आप कितनी जो ना मेहनत करते हो। जब अंटिल मैट्रिक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था और मैट्रिक के बाद ही जो ना मैंने सबको मन पढ़ना करना और यूनिवर्सिटी आना और ज्वाइन करना, और मैंने ये सोचा कि मैं कभी इंटरव्यू भी दे पाऊंगा मतलब कंपनी में। तो एक ये चीज है। उसके अलावा जो ना मैंने यहाँ के जो सबसे जो चीज मेरी सीरीज में नहीं लिखी जो आप नहीं देख सकते, वो नहीं, ये नहीं देख सकते कि मैंने बैकएंड पे कौन कौन से काम करे हुए हैं जो मेरी सीवी में असाइड सीएस होते हैं। लाइक आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मेनी कॉम्पिटिशन्स और ऑलमोस्ट है अपने अपना एक स्टार्टअप भी शुरू कर दिया था और वो कैसे बंद हो गया, फिर से शुरू कर रहा हूँ। और उसके अलावा एफिनिटी में मैंने अभी काम किया है, वो भी अभी सीवी में अपडेट नहीं किया हुआ मैंने। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त अजय, थैंक्स वेरी मच। आई थिंक दैट्स मतलब बहुत अच्छा लगा ये सुन के, ऑफ कोर्स। और आपकी जो है आपका सीवी भी बड़ा ऑलरेडी काफी अच्छा सीवी है कि जिसके अंदर मुझे काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं। मैं एक चीज पर्टिकुलरली जो आपने भी मेंशन की कि आप कंपटीशन से पार्टिसिपेट करते हैं, सो जब हारते हैं या फेल होते हैं तो कैसा फील होता है, और उस वक्त क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? सर नेक्स्ट स्टेप होता है कि फिर से पार्टिसिपेट करना है अगले साल। सर अभी सर एक कंपटीशन हो रहा था, उसमें मैं तीसरे साल पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी फेल हो गया। तो इस बार सोचा था चौथे साल भी पार्टिसिपेट करूंगा, मगर कंपटीशन ही नहीं हुआ कोविड की वजह से। इस कंपटीशन में जब आपने दूसरे साल या तीसरे साल पार्टिसिपेट किया तो क्या चीज डिफरेंट की? सर पहले तो जजेस से मैंने कांटेक्ट करा हुआ था, जिस जज ने मुझे मतलब कि फेल किया था, मैंने उनसे कांटेक्ट करा कि आपने मुझे किस बेसिस पे फेल किया हुआ है। उन एरिया पे मैंने मतलब ट्राई किया कि इम्प्रूव करूं। जैसे सर पहली बार मुझे फेल किया गया था कि आप जो कंपटीशन जिसमें करने जा रहे हैं वो स्पीच नहीं थी, वो ये ना कोई ये कंपटीशन था। तो फिर उसमें मैंने मतलब थोड़ा बेस बनाया कि भाई इसको कैसे बीट किया जाए, टैकल कैसे किया जाए। उसके बाद अगर उस साल से उसमें मतलब फेल हो गया तो दूसरे साल एक और बंदी ने कहा था कि आप अपनी स्पीच में इमोशंस नहीं ले पा रहे, आपको वो काम करना चाहिए। तो इस साल उस पर प्रैक्टिस करी हुई है, अभी देखते हैं हो गया तो इंशाल्लाह इस बार तो कुछ ना कुछ करके आऊंगा। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। नहीं, दैट्स वेरी इनकरेजिंग एक्चुअली, बहुत सो जब आपको कोई बताता है कि आपने ये सही नहीं किया और ये करना चाहिए, सो क्या फीलिंग होती है कि क्या आप ओपनली एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, या फिर आप समझते हैं कि नहीं आपने पहले भी बहुत अच्छा किया था और वो जजेस की गलती थी या क्राइटेरिया ऐसा था इसलिए आप नहीं कर सके? नहीं सर, ओपनली तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आपका नहीं पता होगा। मगर अगर आप उनको मतलब माइंड में जरूर रखें कि आपको उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या वो बात आप में सच्ची में है या नहीं है, या कोई आपको ऐसे ही मतलब कह के चला गया। तो पहले देखता हूँ कि मतलब कि सच्ची में कोई ऐसी प्रॉब्लम है या मतलब ऐसे ही कोई मतलब कह रहा है। तो अगर सच्ची में प्रॉब्लम है तो आपको उस पर जरूर काम करना चाहिए। सही। और ये जानने के लिए कि वो सच में प्रॉब्लम है, आप क्या उनसे एग्जांपल्स पूछते हैं? नहीं सर, उनसे तो मतलब आप नहीं पूछ सकते, आपको खुद से पूछना पड़ता है। उनसे वो तो आपको एक बार देख रहे हैं, आप तो रोज खुद को रोज देख रहे हो ना। अच्छा, और जाहिर है इतने कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, इतनी सारी और भी चीजें की हुई हैं, सो उसमें कामयाबी भी मिली होगी कभी, डेफिनेटली। जी जी सर। तो जब कामयाबी मिली है तो उस वक्त आपकी क्या अप्रोच थी? सर उस वक्त ये सोचते कि अब दूसरों को कैसे मतलब बताऊं कि जो मतलब कामयाब नहीं हुए या जो अगली बार हमारे जूनियर्स आएंगे उनको कैसे बताना है कि हमने क्या मतलब किया जो हम कामयाब हुए।
हाउ कैन वी डिफाइन दैट कि हम कैसे हुए, क्या मतलब करना चाहिए आपको? और खुद क्या था कि आपने अब नेक्स्ट ईयर अगर उसी तरह के कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया तो क्या आपने उसी अप्रोच के साथ किया या डिस्पाइट विनिंग आपने सोचा कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? नहीं सर, मैंने तो एक बार जीत के दूसरी बार ऐसा था कि यार पहली बार जीत गया हूँ, इस बार भी जीत जाऊंगा, तो हार गया। तो एक बार हारने के बाद फिर रियलाइज हुआ कि भाई आप बहुत पीछे हो, मतलब अभी आपको काम करना चाहिए अपने ऊपर। सही सही सही। तो क्या किन चीजों में अजय आप समझते हो कि और आपको डेवलप मजीद अपने आप को करना है, कौन से एरियाज हैं वो? सर कुछ जो मैं समझता हूँ वो मुझे ये है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब मुझे डेवलप करने चाहिए अपने। लाइक आई वाज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, तो मैंने खुद को बहुत चेंज किया है अभी, लोगों से मिलना करना और जैसे इंटरव्यू में आना कि एक तरह से कॉन्फिडेंस जैसे बढ़े। तो ये सब चीजें मैंने अभी शुरू कर दी हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। और कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं दैट यू फील वुड हेल्प यू इन अचीविंग योर विजन? सर मेरी जो क्यूरियोसिटी स्किल्स है, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्यूरियस होता हूँ। तो वो जो है ना क्यूरियोसिटी मुझे जो है ना मतलब कभी ऐसा मोटिवेट करती रहती है कि भाई आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे वेब डेवलपमेंट है, तो मैं मतलब इतना क्यूरियस होता हूँ कि भाई ये भी सीख लेना है, वो भी सीख लेना है। और यही जो चीज़ चीज़ चाहिए होती है प्रोग्रामिंग में, जैसे नई चीज़ आते जाएं आप उसको सीखते जाएं, लर्न करते जाएं। गुड। तो जो ये आई मीन आई रियली अप्रिशिएट द क्यूरियोसिटी एंड बीइंग क्यूरियस ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या ऐसी लेट मी पुट इट इन अ वे कि जो ओके सो ऐसी क्या लर्निंग है आपकी अभी तक इन योर दी इन योर स्टूडेंट लाइफ दैट यू हैव स्पेंट सो फार, कि ऐसी क्या लर्निंग है कि जिसको आप समझते हैं आप हमेशा अपने साथ रखना चाहेंगे और जो आपको कामयाब करेगी? सर द लर्निंग डेट मतलब में कुछ ऐसी लर्निंग है, मतलब कि इंसानों से सीखना। अगर बेसिकली ऑब्जर्विंग, सर ऑब्जर्विंग पावर बहुत मतलब अच्छी होनी चाहिए लोगों की। मतलब कि आप अगर किसी 7 लोगों के साथ बैठे हुए होते हो ना, तो आप 1 घंटा अगर उनके साथ बैठते हो तो आपको 7 नए स्किल आने चाहिए जो उन लोगों में है। सही सही सही। कोई चीज अजय जो आपको पूछनी हो मुझसे? एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन माइंड? सर मुझे तो कोई मतलब आइडिया भी नहीं था कि अभी इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि मुझे मेल शायद रिसीव नहीं हुई थी। तो अभी मेरा मेरा मतलब कोई भी मतलब मैंने प्रिपेयर्ड क्वेश्चन नहीं है। नहीं, फिर भी अगर कोई ऐसी चीज हो, कोई और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग कम्स टू योर माइंड, आप जाहिर है यू टोल्ड मी कि आप यू आर क्यूरियस इन एवरी सिचुएशन, सो तो कोई सर बस एक ही क्वेश्चन है कि मतलब मुझे आप रिव्यू क्या देंगे कि मुझे सर किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए? आप भी मेरे साथ अभी सर 5-10 मिनट हो गए हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ तो पता चला होगा, आप इंडस्ट्री में हैं सर, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। सही, इस पे भी हम बात करते हैं थोड़ी देर में। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि आप आई मीन आप ट्राई करते हैं चीजें बहुत, जो आपने भी बात की, और मैं आपके सीवी में भी देख रहा था कि जाहिर है आपने काफी कोशिशें की हुई हैं, प्लस आपने खुद बताया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो जाना जी कहाँ चाहते हैं अजय? व्हाट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इवेंचुअली? मतलब क्या चीज आपको सेटिस्फाई करेगी, क्या चीज व्हाट विल मेक यू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, और यू विल ऑलवेज वांट टू कीप ग्रोइंग? सर जो मुझे सेटिस्फाई करेगी ना चीज, जो अगर जो मैंने मेरे साथ मतलब गलती हुई है ना, जो मतलब कि 10 साल मैं अपने गांव में था और वहां पे मतलब मुझे पता भी नहीं था, मतलब एक तरह से मतलब इग्नोरेंट थे, मतलब कुछ भी नहीं पता था। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं किसी मतलब ऊंची पोजीशन पे अगर पहुंच जाऊं कि डेवलपमेंट पे या किसी कंपनी के किसी हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच जाऊं, तो चाहूंगा कि उस अपने एरिया को मतलब डेवलप करने में हेल्प करूं, वहाँ के लोगों को मतलब कि मतलब बताऊं कि यार ये काम भी हो रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, वेब डेवलपमेंट या डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा मैं आपको आई मीन जस्ट जस्ट फोकसिंग अ लिटिल लाइक डेफिनेटली हाईली अप्रिशिएटेड जो आपकी एस्पायरेशन है, बट लाइक इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें आपने मेजर्स किया है, सो वुड यू लाइक टू बिल्ड योर करियर इन दैट एरिया ओनली,
yeah, you would like to try something different in future? Yeah, do you see yourself and you know doing a top level job with respect to computers, or you know in this field only, या कुछ और आप diversify करना चाहेंगे? सर तो मैं अपने आप को एक रिसर्चर मतलब देखना चाहता हूँ, जो मतलब कि एआई और एमएल वाली फील्ड में रिसर्च करे और इसमें मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट मतलब लाना चाहता हूँ, बजाय किसी डेवलपमेंट में डेवलप होने के मतलब वेब डेवलपमेंट की साइड के अलावा मैं यहाँ रिसर्च फील्ड में जाना चाहता हूँ कि रिसर्च में सर्च करूँ. Okay, okay, all right, great. Thank you once again, Ajay, and very nice talking to you. Yeah? Thanks. Yeah, thank you, Ajay. Mr. Ziad, what feedback do you have, and what are some of the points जो आपको अजय के बारे में बहुत अच्छे लगे और वो जो आपको लगता है कि वो थोड़ा सा उस पे काम कर सकते हैं? जो points अच्छे लगे वो definitely his approach, his positivity, his can-do attitude, curiosity, how he wants to achieve you know different things. एक learning attitude, learning agility जो है कि you know whenever even when in these situations when I think the way I see it, he is always looking forward to give back to the society or to somebody else, you know, and to share his knowledge and learnings. So ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो ओवरऑल इन्होंने जो बातें की, the way he talked about, I think he was very genuine, और जो approach थी बहुत direct थी, which showed the confidence in himself, and this is something which I appreciate के in terms of the failures जो उन्होंने बात की कि I mean you know he takes the learnings in a way कि he still maintains his position, his composure, but you know take the learnings and you know think about moving forward, trying again. So these are some of the aspects which I really liked. I think one thing in pure sense for an interview that I would like to mention here is कि अजय के साथ बात करके बहुत मजा आया. We talked about a lot of topics. I was able to understand his personality in a good way. But I think कि जो एक चीज अजय आपको ट्राई करनी चाहिए, especially when you are giving a job interview, और ये मैं सभी से बात करना चाह रहा हूँ कि देखें आप आए हैं इस जॉब के लिए फिलहाल, राइट? सो जब आप इंटरव्यू देके जाएं, द कंपनी शुड बी एबल टू क्लियरली सी कि आप इस जॉब के लिए क्या कंट्रीब्यूट करें. सो जो भी कोई सवाल है, आई थिंक कि जब आप इंटरव्यू में आते हैं उससे पहले आपके जहन में ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास ये 3 या 4 चीजें हैं जो मेरी मेन कोर एरियाज हैं और जिस वजह से कंपनी मुझे रखेगी. बिकॉज मैं अगर इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं आपसे 10 मिनट या मे बी 1 घंटे के लिए भी अगर मिला हूँ, तो मुझे उस 1 घंटे में ये समझना है कि आर यू रियली द बेस्ट वन फॉर दिस जॉब. आप इधर किस जॉब में रहते हुए आप कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, यू नो, और डेफिनेटली हाउ यू वुड आल्सो डेवलप योरसेल्फ. सो कोई भी सवाल हो, चाहे मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जो सीवी में नहीं लिखा है, या मैं आपको बताऊं आपसे पूछूं अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं, सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं. ये सारी दीज आर क्लियर अपॉर्चुनिटीज के जिनको आप लेके आप पूरी बात करें और एंड में आप ऐसे लेके आए वो घुमा के कि एंड में आके वो सम वे इन वन वे और द अदर वो फोकस्ड हो जॉब पे, कि वो उससे रिलेटेड हो, मतलब उससे लिंक हो रही हो कि यू नो आप कंक्लूड ऐसे करें किसी भी बात को कि वो इस तरह लिंक करें उसको कि आगे इंटरव्यू लेने वाले को क्लियर समझ आए कि यस ये मेरी लाइफ की लर्निंग्स हैं, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू यूटिलाइज देम और यूज देम फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस जॉब. तो डेफिनेटली लाइक मेरी जो पर्सनालिटी है, या मैं जो जिस चीज में मुझे अभी इस इंटरव्यू में जो मुझे अच्छा लगा बात करके, वो of course I like to talk about you know bigger visions, you know people who have you know are thinking out of the box. So this is what was clearly evident when Ajay was talking about his aspirations and you know his learnings. So but एक चीज perhaps जो you know at the end of the day मैंने इस जॉब के लिए एज अ मैनेजर इन दिस कंपनी मैंने इस जॉब के लिए एक राइट पर्सन एम्प्लॉय करना है. सो उसके लिए डेफिनेटली यू नो मुझे ये भी क्लियर समझ आना चाहिए कि यू नो दिस इज द पर्सन जो कि उधर ऐसे कंट्रीब्यूट करेगा व्हिच वुड हेल्प इन मेकिंग द कंपनी सक्सेसफुल एंड रियली फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस जॉब. सो दैट्स परहैप्स यू नो वन. और मैं एक और जस्ट वन फाइनल थिंग कि देखिए जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो दे आर एज गुड एज मैं आपसे पूछूं कि आपकी मर्जी आप कुछ भी बताएं, यू नो मतलब वो इतना ओपन एंडेड क्वेश्चंस की एक ब्यूटी है और वो बड़ा एक एडवांटेज होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए.
जिस भी जगह पे कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं मुझे यस के नो में बताएं यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यू नो, वहाँ पे इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग बिकॉज यू आर देन नेवर एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आप अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करें। दिस इज द मोमेंट जब इंटरव्यूअर जो है, मतलब ऐसे आम दिनों में, आम जिंदगी में, आप जब भी अपने आप के बारे में बात करना शुरू होते हैं ना, लोग थोड़े टाइम के बाद बोर होना शुरू हो जाते हैं। इंटरव्यू एक वाहिद ऐसी मीटिंग है कि जिसमें जो इंटरव्यूअर है वो बैठे इसलिए है सुनने के लिए कि आप अपने बारे में बताएं। सो आप बताएं सब कुछ और एंड में लाके उसको प्लेस ऐसे करें कि यू नो एंड वही निकल के आए सामने कंक्लूजन के हाउ वुड दिस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर जॉब एज वेल। ओके, आई थिंक वन थिंग जो थी अजय के बारे में, एक चीज़ कि उन्होंने काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी हुई थी, उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था, स्टार्टअप करा था। तो ये चीज़ें कितना ज़रूरी होती हैं आपकी सीवी में होना और अपने इंटरव्यू में इसको इंक्लूड करना? आई थिंक देखिए, जैसे जैसे आप मैनेजमेंट लेवल्स में क्लाइंब करते हैं और दिस बिकम्स इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। शुरू से डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन को, आई मीन नोबडी वांट्स robots, right, unless you know there's a specific nature of certain job, but तो जो अगर if a person has extracurricular activities और वो अपना इंटरेस्ट लेता है दूसरी चीजों में, so that actually helps keep the mind fresh, helps maintain the focus। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए जो राइट यू नो काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, चाहे वो either they make you learn or they help you perform better, so yeah, that's very important activity. We have a lot of questions coming in from the chat. Jawad Shamsi has asked us quickly कि fresh graduates अपनी salary negotiate कैसे करें इंटरव्यू के टाइम पे? And I believe this is after the interview, once you get accepted is when this happens, but anyways. अच्छा जी, so देखें अब इधर people might disagree with me, but मेरा clearly एक चीज बहुत ही strong belief है, सही है, which I mean super strong belief कि I don't think you should be worrying too much about money at the start of your career, right? जब आप start करते हैं, I think you should look for the job or position जो कि really, I mean see ये थोड़ी जरा एक long term thinking है। मे बी आपको शॉर्ट टर्म में ये लगे कि नहीं इसमें क्या फायदा, मैं क्या करूंगा, यू नो मैं इतने पैसों में तो ये भी नहीं कर सकता, ये भी मेरे लिए चैलेंज हो जाएगा। बट मैं आपको रियली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैंने जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो देखा है, मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जो लोग अपने पैशन के लिए जॉब करते हैं ना, मतलब जिस चीज में उनको, मैं अपने आप से हमेशा एक सवाल करता था, जब मैंने करियर अपना मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटीज थी उस वक्त, जिसमें से मैंने एक पिक की, और मेरा सिर्फ एक सवाल था अपने आप से कि मैं इनमें से कौन सी नौकरी में बगैर पैसों के भी कर लूंगा। सो द वन के जहाँ पे मैं इतना मोटिवेटेड हूँ, जो मुझे इतना एक लर्निंग और वो दूसरी चीजों में, और वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी मुझे मजा है उसमें के काम करने में, कि मैं बगैर यू नो कि मुझे अगर कुछ भी ना मिले या, और फिर भी मैं आई एम एबल टू डू इट। सो द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, आप ऐसा परफॉर्म करते हैं और आपकी वो एक पैशन, वो चीज होती है जो नेचुरली निकल के आता है, तो वो आपको बहुत सारे अपने कंपटीशन से, दूसरों से बहुत आगे ले जाता है, और इवेंचुअली द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेस दैट। फिर आप जिस पॉइंट पे छोड़ने की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट वांट टू लीव यू, एंड देन दैट्स द टाइम व्हेन यू कैन नेगोशिएट एक्चुअली। और उस वक्त फिर ऑर्गेनाइजेशन विल ऑफर यू नो दे वुड नो योर वैल्यू। और कहीं पर नहीं है खुदा ना खास्ता, प्रसी जिंदगी है, इट्स रियलिटी के हर जगह पे परफेक्ट सिचुएशंस नहीं होते। इवन ये भी फैक्टर बहुत 100% परफेक्ट सिचुएशन नहीं है। परफेक्ट तो वो होती है कि आपको स्टार्ट में आपके मतलब के पैसे मिल रहे होते हैं, बट इवन दो अगर नहीं भी होता तो देन यू, आप अपने आप की कैपेबिलिटीज इतनी बिल्ड कर चुके होते हैं कि यू कैन ऑलवेज देन यू नो यू हैव योर एम्प्लॉयबिलिटी, आपने एक अपनी डेवलपमेंट पे काम कर लिया होता है, तो यू कैन ऑलवेज मूव राइट। उस वक्त देन यू कैन नेगोशिएट, देन यू हैव सम अचीवमेंट्स विद यू। जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं उस वक्त अगर आप इफ यू टॉक टू मच अबाउट मनी, सो आई थिंक दैट या आई मीन जाहिर है अनफेयर पे भी नहीं होनी चाहिए, एज लॉन्ग एज इट्स फेयर। थोड़ा सा फर्क है, देन यू शुडंट बी वरीइंग सो मच अबाउट दैट। यू शुड फोकस ऑन द वन के दैट विल कीप यू कंटेंट, कीप यू ग्रोइंग, मजा आएगा, रोज सुबह उठ के दिल चाहेगा उस जॉब पे जाने का। दैट इज समथिंग आई थिंक जो बेंचमार्क या क्राइटेरिया होना चाहिए।
Okay, thank you so much. I think next we have Osama Khan. Osama, are you here? Osama, is Wajiha here? Wajiha Basit? Fatma Ali. Okay, let's move on to the. Oh, hi, Fatma, are you here? Okay, Fatma, can you give me a short introduction about yourself? What program you're in? All of that. Yeah. Fatma, your mic is off. Your mic. My apologies. It's okay. My name is Fatma Ali. I'm from Jeddah, Saudi Arabia. I've shifted to Karachi around 4 years ago. I'm currently doing my bachelor's in computer science. I'm currently in my final year doing bachelor's in computer science from FAST University. And I'm currently exploring various fields, not only data science, graphic designing, exposing myself to various parts in computer science, also looking up fields beyond computer science, um, content writing, editing, trying to be a transcriber agent as well. So I'm practicing all these fields as I go along. Okay, now Mr. Ziad will conduct your interview. So, Mr. Ziad. Right, Ji. So thank you very much, Padma, for your interest in this position. Thank you very much for applying for this and taking the time to prepare your CV and submit it. Highly appreciated. I welcome you to this interview. And before we start, of course, I mean, I don't need any now. I think I have introduced myself already, so I won't go into that. But I think what I would really like to understand is I would like to give you an opportunity first. If you would like to tell a little bit more about yourself and some of the achievements along the way that you would like to highlight. So I've done not only various internships, but I've participated in various activities, graphic designing competitions, programming competitions. I also secured second and third positions in programming competitions because this was actually the first time I was exposed to programming. So it developed a bit of an interest in me to do something because I normally do programming in terms because I've used various Microsoft softwares. So it was mostly text editing and that. This is the first time I did something creating a software, and also I'm also inspired by implementing a system because living abroad I've learned there's a proper structure implemented there, and I want that system to be implemented in Pakistan to help others in need, because not only should we take criticisms as well, but also give back to the community as well. Right. नहीं आपने अच्छी बात की कि we should be able to impact the community in a positive way. So कोई ऐसी specific achievement that really makes you proud and makes you happy whenever you think about it? Mostly ये कि I have done not only internships but ये कि working in NGOs as well. So helping others in need. We've done various drives, where we've helped to growth and giving back to others in need, especially during cold times and in COVID times as well. We had to make ration, so we had to give to others as well. And most people who also lost their jobs, loans. They had lots of loans and they were in debt, so we had to help them as well during those tough times. अच्छा, ये क्या थोड़ा और बताइए इसके बारे में. What was this specifically? I mean, what was your contribution in this project? Contribution was media and promotions as well, and on-site help bhi kiya. Not only that, but being a leader as well, instructing others on how to do the proper task as well, because at times it becomes the task becomes too much that people become overwhelmed unless you properly organize them and instruct them on what needs to be done and in the proper order, then it would be possible. Okay. Or any specific learnings that you would like to share?
Learning, I've learned to a lot in terms of exposing myself. Learning new skills. Um, Taking as the more I've learned is that people always would criticize, but at the same time you also have to take that criticism uh, in order to contribute to what to the to the goals or the visions of the team or to the requirements of the company as well. Um, Not only that, but So, do you think, Fatma, मैं ऐसी specific project की बात कर रहा हूँ. I mean, this is really interesting actually. So, thanks very much for sharing this. Um, आपको do you think कि अगर आप इस project में नहीं होती, right? तो would it still have been successful या फिर नहीं ये possible ही नहीं होता? I would believe that possible probably hota, I always believe that there would be someone else who would do 10 times better job than me, but self satisfaction फिर नहीं होती उसमें. And then फिर होता कि आगे जाके आप if you move on and you want to help others as well, तो उस केस में that would just be a dull experience. So the more you get involved, the more you get engaged, the more it feels satisfaction level with you that you don't want to leave this field, you want to keep doing it. Right. So, what's your aspiration? I mean, in terms of where do you are applying for a I mean, in this would you like to remain within this field? Yeah, would you like to diversify into other areas as well within the organization? In future, how do you see yourself developing? Either as a project manager or perhaps doing PhD as well. Open your, I've always tried to open myself to different fields, either in terms of studies or perhaps teaching someone or, doing jobs in perhaps in administrations or as a manager, or going a bit unorthodox as well, because there are other fields that not always require computer science, especially such as transcriber agent or even content writing or graphic designing. So we're trying to really explore myself in other fields and how I can better contribute myself. अच्छा वेट कभी ऐसी सिचुएशन भी आई होगी, राइट? आपने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया और भी आपके अचीवमेंट्स हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आपके पास बहुत सारे काम होंगे and you would be wondering कि मैं क्या पहले करूं, क्या बाद में करूं, टाइम नहीं है, ऐसा कभी हुआ है जब बहुत सारी चीजें एक साथ जमा होगी? It definitely becomes overwhelming at the end of the day, especially in spite of organizing it over the week. It becomes tiring. So I always look कि मैं if not 100% complete करूं, but इतना complete कर लूं कि at least requirement complete हो सके. If not that, then अपनी टीम को delegate में कर सकूं, अपने members को properly delegate कर सकूं ये task to overcome that hurdle. क्या guiding principle क्या होता है? What do you follow? I mean, how do you prioritize then? And how do you choose on delegating? कुछ task आप करती होंगी, कुछ नहीं करती होंगी delegate. So what's the criteria? Occasionally, members wise meetups होती रहती हैं, तो उस तरीके से experience you get a vision के एक impression मिल जाता है आपको कि वो member किस तरह है in terms of strength, and then आप उस हिसाब से आप delegate कर सकते हो best तरीके से, not too much, not to overwhelm them, but enough कि वो properly complete कर सके task. अच्छा, आपने जब delegate किया, right? और आपके प्रोजेक्ट में let's say there are 5 areas, उन 5 में से आपने तीन को डेलीगेट किया, और उन 3 में से एक एरिया में there was a breakthrough, जबरदस्त सक्सेस मिली, so much so, और ये रियलिटी में बाय द वे होता है ऐसा, so much so कि एट द एंड ऑफ द डे जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है, जब भी वो कहीं उसकी बात होती है तो पीपल से कि जी वो एक चीज अगर नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो सकता. So this is what made all of this happen. But वो चीज आपने delegate की हुई थी, and it is then somebody else's sort of contribution as well who made it possible. Of course आपकी guidance उसमें होगी, but किसी और ने आगे रहते हुए वो चीज की है. You were not following it up yourself. How would you
how would you react to this eventually? आप उस project के बारे में बता रही हैं, so would you really give the credit to that person या आप कहेंगी कि नहीं? I mean, how would you how would you how would you give credit या फिर आपने क्या इस achievement के बाद how would you explain it to the audience? Maybe आप हम सबको बता रहे हैं कि ये project था और उसमें उसको announce करें, तो how would you do that? Definitely, especially अगर project अगर team ने project achieve किया तो it's definitely a team effort. But if it's a member doing something beyond that project, especially groundbreak achievement, so it's definitely the members' achievement. It's not कि owner definitely उस पे take over करके वो कर ले. That totally goes against the members' right. So इस हिसाब से it's the members' achievement, and they should be acknowledged as well for that part, respectively. Right. No, very good. I think that I like the thought process. तो इसमें won't you feel कि ये तो कि ये तो मैं भी कर सकती थी and उसने कर लिया तो क्या ऐसे कभी feeling आई है इस तरह की achievements में जब somebody else maybe achieves more than you, or do you support? I would get surprised, especially अगर जो मैं नहीं कर पाई वो उस दूसरे बंदे ने कर लिया, especially 10 times better, and I'd really be supportive of that part as well. Even more अगर मैं उनसे सीख भी लूं कि कैसे किया, so that would also be an equal share of effort. So if I say, and this would be my final question, if I say कि what would make you more happy, आपकी अपनी success या project की success? Definitely project की success and the fact that कि पूरी team ने achieve किया, as long as the team is satisfied, the leaders should be satisfied as well, along with that part. Okay, perfect. Right, thank you once again, and thank you, Fatma. Thank you. I mean, it was very nice talking to you. Any specific question that you would like to ask from your mind? No, not right now. Okay, all right. So, Janab, once again, thank you. Thank you for taking the time for this. Yes, I'm over to you. Yeah, thank you, Fatma, for joining us. So, Mr. Ziad, what do you think impressed you the most about Fatma, and what do you think can impress you further about her? Well, I think देखिए मेरे लिए तो ये जो discussions आज हुए हैं ना, these are in real sense quite inspirational. मतलब I have come a long way. मैं बहुत अरसे के बाद connect कर रहा हूँ university के students से. I mean, there is a big difference जो मैं अब realize कर रहा हूँ कि शायद बहुत time गुजर चुका है जब मैं college life में था. I think really I was not. Let me put it this way. I am really impressed with the mindset and how people are thinking, how they are approaching the topics. खास तौर से इसमें जैसे particularly what she mentioned about the team's achievement, and this is these are some of the things which are key, and that would always make you successful, because success is not just defined by the roles or the positions that you get. It's also about how content you are. So अगर आपको एक चीज जो inner satisfaction देती है, एक चीज जो whatever makes you happy and keeps you growing, और वो आपका अभी से clear mindset है उसमें, so that is something which one should always carry. और इस particularly इस interview की अगर मैं specific बात करूँ, so उसमें I think the approach, the confidence, plus how she started with a clear introduction, the volume, the pitch, everything was quite confident. That is something which I appreciate. एक और चीज जो बहुत अच्छी मुझे लगी इसमें, वो of course एक maybe मैं शायद ज्यादा लंबे सवाल कर रहा था, so एक precise to the point, एक right उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लिख के प्लान तरीके से बात कर रहे हैं. So ये clarity of mind depict करता है, which I really appreciate. और जो आपका एक thought process है, जो आपके beliefs हैं, उस पे the confidence on that. Maybe what could have improved was again जैसे वही है कि yes, short answers, preciseness is good,
But again, these are also opportunities for you to, tell as much as you can about yourself as well, because it might be the case that आपके short answers say not everyone will get the message that you want or explain भी करना हो. So इनको opportunity देखते हुए wherever you can talk about, but of course not irrelevant stuff, but जो आपको relevance रखते हुए आप you can maybe tell a little bit more about. जो वो होता है ना एक बात से बात निकालें. So वो जैसे interviewer generally और ये मैं अब जो third बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ, instead of concluding at the end जो मैं 2 बातें already मैं कर चुका हूँ, तीसरी बात ये है कि आपको अगर ये फीलिंग आती है कि आप इंटरव्यू दे के नहीं इंटरव्यू लेके आए हैं, so actually I mean this is a good feeling by the way. ये अगर if you are able to manage that, if you are able to do that कि आप उस इंटरव्यू में बैठ के आप ऐसी कॉन्वर्सेशन डेवलप कर लें कि it's really an interactive one, it's both ways. बात से बात निकले, आप एक बात करें दूसरी, और if you are able to change the direction. देखें एक बात है, ये 1 घंटा है, सही है. 1 घंटे के अंदर you have to just convince the person that you are the right person for this job. Market भरी पड़ी है, there are a lot of people who would be giving interviews. You have to stand out. इस 1 घंटे में so just try to talk about the good stuff. Balance रखें उसको, थोड़ा सा realistic रखें कि बाद में ऐसा भी नहीं कि बहुत surprises आ जाएं. But I think एक opportunity आप उससे बात से बात निकालें और अपने जो की स्ट्रेंथ्स हैं उन पे फोकस रखते हुए उनको talk about them. So these are some of the things which you can gain but I understand कि in all fairness कि अभी यहाँ पे हमारे पास 10 मिनट dedicated थे, so of course हर आदमी ने भी सोचा होगा definitely सबने कि हमें उसी टाइम भी बात करनी है. So but in real life I think when you have an hour or so you can talk a lot more, but keep it to the point as well. Okay, absolutely. We have a lot of questions. Someone also raised their hand, so if they could again raise their hand and open their mic so we could take the question. There's a question by Akib Ahmed. He says that आपके job requirements में skills की requirements होती हैं कुछ, but those skills are not taught in universities. In universities, you're taught the theoretical aspect of work. So how do you get those skills in order to apply for jobs like that? अच्छा जी, so देखिए सबका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है. मैं आपको अभी अपने आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली. मैं पर्टिकुलरली जो इन इंटरव्यूज में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आई वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दी स्किल्स, आई वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर क्वालिफिकेशन सो मच. ऑफ कोर्स वो सीवी में मैं जब पहले बात की कि वो देख लिया, पहले वो देख के शॉर्टलिस्ट किए एंड देन मैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया. बट जो चीज मैंने चेक करनी है वो अप्रोच टू सर्टेन थिंग्स. जब आपकी लर्निंग्स होती हैं, जब आपके फेलियर्स होते हैं, या फिर हाउ डू यू अप्रोच सक्सेस एज वेल, ये चीजें बड़ी की हैं. बिकॉज जो हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो कि आप लोग थ्योरी में आप नहीं सीखते, जो आप जॉब में आने के बाद सीखते हैं, ये वो चीजें हैं जो आप जॉब करके सीखेंगे. तो डे 1 पे मैं ये आपके लिए फेयर नहीं होगा कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर या आपको इन सब चीजों के बारे में पता. मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि there is no shortcut to that. आप पहले जज ही नहीं कर सकते कि एक्चुअली जब तक एक्सपीरियंस ना हो. तो ये अगेन दैट गोज बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो किसी और ने पूछा था कि जो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं वो इसीलिए मांगते हैं ताकि एटलीस्ट दैट पर्सन हैज सम आइडिया कि किससे किस तरह बात करनी है, हाउ टू बिहेव, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. बट फ्रैंकली स्पीकिंग इस जॉब की ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है. सो इसलिए व्हाई शुड आई पुट यू इन अ पोजीशन कि जहां पे मैं आपकी ये वाली स्किल्स टेस्ट करूं, राइट? हाँ, अगर ऐसी जॉब होती जहां पे आई वुड हैव बीन लुकिंग फॉर अ 10 years एक्सपीरियंस और इवन 2 years एक्सपीरियंस, तो वहां पे मेरी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग डिफरेंट होती. Then I would have talked about some personalities, some of the instances. तो वो जाहिर है डिपेंड्स कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. It's an entry level position. So I think yeah. So but one thing, it's an excellent question actually, because people management is really something which is one of the key skill sets for any job to be successful in any job. सिर्फ आपको एडवांटेज ये मिलता है कि एंट्री लेवल पोजीशंस पे आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता और आपको एक रूम मिलता है दैट यू वुड लर्न. बट आपकी अगर लर्निंग एजिलिटी है, इफ यू हैव एन ओपन माइंडसेट, आपकी ओपननेस है, सो यू वुड ऑलवेज लर्न एंड लर्न क्विकली एंड दैट विल गिव यू द एज देन.
आप ये देखेंगे हमेशा कि जब आप शुरू करते हैं ना, तो आप एक ही जैसी, दो लोग एक जैसी पोजीशन पे शुरू कर रहे होते हैं, एक साल बाद डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, और बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि a person much junior to the other person is also, you know, end up becoming the being in a much senior position in that organization. It's all about, you know, your learning agility, your attitude, your skills of dealing with people. वो सारी चीजें जो आप maybe किताबों में शायद you know पढ़ के आप शायद आपको प्रैक्टिकल, मतलब पढ़ के डेफिनेटली आपको एक अच्छा थॉट प्रोसेस आपका बनता है, आपको उससे फायदा होता है, आपको वो चीज प्रैक्टिकल सिनेरियोस भी आपको थोड़े से देखने होते हैं, which further enhances all of these skills. Absolutely. What would you think about, because in my opinion, a lot of skills can also be developed just through the use of internet. अब internet पे ही इतने सारे आपको online workshops मिल जाते हैं, certifications मिल जाती हैं जो आपको कुछ basic skills सिखा सकते हैं. So I think it's always good to refer to Google and see what are some free courses that you can take on your weekends or on your days off, और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने skills बढ़ाने के लिए, just to improve job prospects. एक और सवाल था फहद कुरैशी का, सिनेरियोस अगर आपको HR के इंटरव्यू में मिले, इनको जैसे मिले थे, एक सिनेरियो था कि दो कंपनीज हैं, एक आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा दे रही है, लर्निंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, और दूसरी कंपनी है जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन लर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स कुछ खास नहीं है. तो उस सिनेरियो में कैसे जवाब दें आप HR के इंटरव्यू को? अच्छा जी, अगेन इट्स अबाउट योर प्रेफरेंसेस. मैंने इस पर भी बात की थी पहले और बहुत डिटेल में की थी, सो प्लीज रेफर बैक टू दैट डिस्कशन. मेरा आई वुड पिक फॉर द फर्स्ट वन, बिकॉज मैंने अगेन वही बात की, देखें स्टार्ट में टू पीपल कैन बी एट द सेम लेवल, राइट. मे बी एक सैलरी मुझे आज जो बहुत अच्छी लग रही है, इट्स ऑल अच्छा चले, लेट मी पुट इट इन अ डिफरेंट वे ताकि आपको थोड़ा समझ आए. मे बी आप लोग कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं. एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक होती है यू नो एडिंग अप, राइट. जब आप अच्छी जॉब के लिए जाते हैं या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाते हैं जहां पे आपको लर्निंग मिले, and you do not consider money, you don't give preference to money, so it's then probably most likely it's an exponential growth. आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, आपकी अपॉर्चुनिटीज में एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता है, राइट. जबकि अगर मैं अच्छी सैलरी के लिए अभी जा रहा हूँ और मैंने आई हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स, नॉट जस्ट वन, मल्टीपल एग्जांपल्स. अगर एक हम स्मॉलर ग्रुप में बात करें, आई कैन आल्सो कोट सम ऑफ द एग्जांपल्स. रियल लाइफ इंस्टेंसेस में कोट कर सकता हूँ कि जहाँ पे अच्छी तनख्वाह के लिए शुरुआत की, 10 साल बाद भी उस तनख्वाह में मे बी 25% का इजाफा हुआ, बिकॉज एवरी ईयर इट्स इंक्रीजिंग अ लिटिल बिट, बट थोड़ा थोड़ा एडिशन हो रहा है. कोई पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हुई, दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, कुछ और क्रिएट नहीं हुआ. जहाँ पे लर्निंग और उस चीज पे ले गए और आदमी ने अपने आप को डेवलप किया, वहां पे 10 years later it's a whole different scenario, because exponential growth में और addition में ये एक बुनियादी फर्क है. And this is how I see these two questions. Okay, last few questions that I have. One of them is very important for us all, I think, क्योंकि अब COVID के बाद ज़्यादातर जो है interviews first round जो होता है वो online हो रहा है. So what would be some key points to always remember when giving an online interview now in this post-COVID world? अच्छा जी, सो ऑनलाइन पे भी, और जो मैंने ये बात की थी अभी कि चाहे फिजिकल इंटरेक्शन है आपका या वर्चुअल है, आई थिंक इन बोथ द केसेस इट्स प्राइमरीली यू शुड इंश्योर दैट योर कैमरा इज टर्न ऑन. आप उसको सी दीज आर द टूल्स. आपके पास क्या है, वर्चुअल में यू शुड हैव द राइट कैमरा. आप अपना पहले टेस्ट कर लें, लाइटिंग, वॉइस, ताकि ये कोई डिस्टर्बेंस ना हो बीच में, बिकॉज दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग. और एक फ्लो में अगर चीज मेंटेन रहती है, देन इट्स तो उसमें एक बैकअप ऑप्शन हमेशा होना चाहिए. हर तरह के लिंक्स में आई थिंक एक आपके पास एक फोन नंबर भी दिया हुआ होता है और एक लिंक भी होता है, तो यू कैन आप दोनों पे डायल करके, एक म्यूट करके आप रख सकते हैं जस्ट एज अ बैकअप ऑप्शन. ये तो बट कुछ ऑपरेशनल लेवल की टिप्स हैं. Like how to approach this is I think आपके पास एक clear opportunity है अपना confidence दिखाने की. You should have a smile on your face.
your posture should be correct. Headphones कोशिश करें use ना करें. आप अपना माइक और उसकी वो वॉइस का बैलेंस ऐसा सॉलिड रखें कि आप एक डिस्टेंस पे बैठ के the person is able to see you properly, आपके facial expressions वो कैच कर सके और फिर आप वो बात करें. use your hands as much as possible. वो मूवमेंट तो ये वर्चुअल कुछ हैं जिसमें चीजों में आप you can और डेफिनेटली वहां पे फिर एडवांटेजेस भी हैं कि वर्चुअल करने में लाइक ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, दूसरी और इस तरह की चीजें हैं भाई आप चीजें मैनेज बेहतर कर सकते हैं. तो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, बट या एट टाइम्स so it's all about creating an impression and how you do that. Background आपके प्रोफेशनल होने चाहिए, your dressing should still be professional. मैंने इन्हें नोट किया है कि लोग वर्चुअल सेशंस में आते हैं, so एक लाइक मैं आपको अपने ही बताता हूँ, जो मैंने पहला एक ट्रेनिंग कराई ऑनलाइन, so I was thinking कि अच्छा जनरली वो वाली ट्रेनिंग जब मैं फिजिकल उसमें कराता था तो सब लोग, आधे से ज्यादा लोग सूट पहन के आते थे और लोग प्रॉपर कोट शूट पहने, प्रॉपर वेल ड्रेस्ड हैं. जब मैंने वर्चुअल की तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे क्या मेरी ड्रेसिंग होनी चाहिए ना. आई वाज फीलिंग ऑकवर्ड कि मैं टाई और कोट पहन के मैं बैठा हूं सामने. बट when I joined into that session, actually that gave me some confidence as well. कुछ लोग इसी तरीके से आए हुए थे, बट कुछ लोग जो है वो टी शर्ट्स और एक डिफरेंट उनकी ड्रेसिंग थी. सो जो एज अ ट्रेनर या एज अ पर्सन की जब मैंने उनको अप्रोच किया, सो मे बी इट्स माई माइंड सेट, मे बी इट्स जस्ट माई माइंड सेट, लेकिन एटलीस्ट मैं कुछ जजमेंटल हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू द सीरियसनेस, राइट, इन द डिस्कशन. सो उसमें ये है कि ट्राई टू स्टिल ड्रेस अप प्रोफेशनली एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो या. Okay, so we are going to have to wrap up. I have to thank Samin Javed, Ajay Kumar, and Fatma Ali for joining us. Thank you so much. It takes a lot to participate in these kind of interviews, so thank you for being there. I would also like to thank Wajiha, Usama Khan, and Shoaib Bhatti for also volunteering and getting selected by their university. I will wrap up now. I would Mr. Ziad, do you have anything else that you would like to add? No, I think just maybe to sum up, it's really what you have to. It's really about these three key things. What I talked about. So I won't again go into the details. Just one thing, interview mein generally it's all about telling the person that you would be able to use these skills when the time comes, or making the person believe. It's about the confidence. It's about it's about your mindset. It should be positive. It should be can do. Still at the same time, आपकी learning agility होनी चाहिए, that you should be able to learn from your experiences. So yeah, I think this is something, and just take it as an opportunity. It's all about you. You can talk about yourself. The person is there to listen to you. Structure it properly. Prepare well in advance, and don't be and please do not be nervous. पूरे interview में किसी भी एक point पर अगर आपको ऐसा लगे नहीं you will not make it, still try again, then try again. You have multiple chances during that half an hour or 1 hour or whatever is the time duration of the interview. So just take it as an excellent opportunity and just try to make the best out of it. Okay, thank you. That was amazing advice. Ma'am, sorry for interrupting. Can I have one of my questions? I think it was echo. One thing that I can also add is that a lot of the times in interviews, they ask you a question, why in particular that organization that you would like to join. So for that, I think it's very important that you research them and you're prepared with solid reasons why you would like to join. And that's how you can impress them into showing your interest, being very genuine into that organization. So looks like you answered all your question. Amna, sorry to interrupt at this stage. एक चीज और कि together with the organization, you should also try to learn a little bit more about the person who is interviewed. So
थोड़ी सी आप उस पे भी रिसर्च कर सकते हैं. There are a lot of platforms. अब तो Google है, just type in the name, you would get something or the other, right? So yeah, yes. I think following up from that, a very, very small question, I think, which is very important, is attaching your photographs in CVs, because कुछ मैंने students की CVs में देखा था कि तस्वीर थी, कुछ की नहीं थी. There's a perception कि bias होता है, but then at the end of the day, social media पे आप उनका नाम डाल के उनकी तस्वीर देख सकते हो. So do you think it's professional to add it to your CV, or do you think it's completely optional? I think it's optional, at least for me, because I'm more concerned about the mindset, the skills, and all. But definitely, the I would like to have a professional person, bring in a professional person, of course. So as long as we're able to approach that topic, whether in the interview, that should be okay. So take it as an opportunity, right? अगर मैं तस्वीर नहीं डालूंगा, right? तो the person would be compelled to type my name on Google and then try to look for me. मुझे नहीं पता मेरी और कौन सी तस्वीरें वहाँ पे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं. I might not want to see them some other picture of mine, right? So this is all of this is an opportunity from the time of submission your CV. So it's all about you. आप जिस तरीके से उसको लेके चलना चाहते हैं, आप उस तरीके से लेके चल सकते हैं. It's your option. आप अगर उसमें तस्वीर डालते हैं, you have the opportunity to pick and choose, right? It's just about how you think about that topic. आप उसको कैसे डील करते हैं. तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप तस्वीर डालेंगे, मैं शायद पे टाइप करके ये ना देखूं कि और, बट तस्वीर रियलिस्टिक होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी, I mean, yeah, as close as possible, right? Of course. So yeah, I think. Thank you, Mr. Ziad, and thank you for participating in today's webinar. A big thank you to Career Pakistan's Top World Program, FAST Karachi, for this wonderful opportunity for students to learn and improve their skills. I had a wonderful time and I learned a lot, and I hope to see you all very soon. Over to you, Ruba. Okay, thank you so much. Just before continuing, Shamir has his hand raised if he wants to continue with that. Sure. Shamir, can you open your mic? Assalamu alaikum, ma'am. Sorry, I just picked a bit late, so I wasn't able to raise my hand. Can you hear me? Yes, you can ask your question. Okay, I just want to ask a few questions from Sir Ziad. It will take around 5 minutes. Currently, I'm a final year student of electrical engineering from UET Lahore, and my current project is final year project is load forecasting, which is a real-time application in NTDC, which actually controls whole of the electricity in Pakistan. So our aim was to approach the load forecasting problem with the modern artificial intelligence solutions. But once we went into the NTDC and saw all the environment and the approach they use, that was actually not so good. So once we engaged them to know that what is artificial intelligence in actual, they didn't even know what is artificial intelligence. So what would you say about organizations lagging a bit in the technology skills? How would you meet a particular organization on the skills you have? Secondly, Sir Ziad, I want to talk about you have been working in Bayer. So I exactly know how much management meetings and cycle meetings you had back in the Bayer, and how particular managers had to see over whole of the Pakistan, and how the manager meetings were there in headquarters in Karachi and back. So sales were a big problem for you, and especially Dr. Imran, who was your CEO right there. So why you haven't just hired a data scientist who would rather predict the sales for you, the future sales, or you just get an idea about how much sales you have? I just know all this. Like I'm son of your former colleague Shakir Manzur Khan, who was the senior product manager back in Bayer. So these are my questions. And secondly, one of the other question is again, it's right there. How would you know that your skills particular fit in the organization? I mean, if the organization doesn't have any of the seed or vacancy of the skills you have, and even enhance your work with your work, so how would you engage them? Okay.
Okay, all right. So I think देखें मैं thanks for this question actually. I mean, and I am trying to really see how to respond to that because basically इसके बहुत सारे dynamics हैं. So एक आपको let's say when you talk about the AI, so and again I mean I'm telling it from an experience, right? कि AI के लिए कुछ ग्राउंड वर्क कुछ और चीजें होना बहुत जरूरी हैं लाइक जिस तरह के डेटा सेट्स हैं जो इंफॉर्मेशन फ्लोज हैं कि हाउ स्ट्रक्चर्ड इज द मार्केट हाउ स्ट्रक्चर्ड इज द डेटा सेट क्या पैटर्न्स हैं बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं बिकॉज जाहिर है एआई एक एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा की बेस पे कुछ प्रेडिक्शंस बनती हैं और सम सजेशंस कैन कम अप. So let me put it this way. अभी वैसे तो जाहिर है जो आपका क्वेश्चन है उसके जो मल्टीपल डायनेमिक्स हैं उसमें से ये कि जो आपने एक बात की कि क्या फिर डेटा साइंटिस्ट उसको बेहतर आउटकम्स प्रेडिक्ट कर सकता था. So I think I mean the short answer is perhaps yes, but मुझे वो as such मैं वो बात नहीं समझ पाया कि I mean in every situation you could have you could perhaps do better, right? तो ये नहीं है कि उस वक्त आपने किया नहीं किया that doesn't really say कि आप कुछ और maybe yes आप हर सिचुएशन में आपको इसी तरह अप्रोच करना चाहिए कि आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं और उसमें मुख्तलिफ टूल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. परफेक्ट मार्केट्स होती हैं एक ऐसी मार्केट्स होती हैं कि जहाँ पे ये सारे टूल्स इतना हेल्पफुल नहीं होते. बट आई थिंक इस पे हम बात कर सकते हैं और भी किसी सेशंस में बिकॉज ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है. इट्स नॉट दैट सिंपल और जाहिर है इसके और भी इन चीजों को समझने के लिए आई थिंक कि हमें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी देखना बहुत जरूरी है. प्लस अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन कि एक जो चीज मैं मे बी समथिंग व्हिच आई रियली फील जिस चीज से मुझे एक बड़ी प्राइड फील होती है कि आई वाज लकी इनफ टू वर्क फॉर ऑल ऑफ दीज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने रिसोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से यूज किए ओवर द इयर्स. सो जाहिर है उनसे जो लर्निंग्स थी एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस केप्ट ऑन इम्प्रूविंग केप्ट ऑन डूइंग बेटर ईयर आफ्टर ईयर. सो उसमें बहुत सारे लोगों का एक किरदार था. जाहिर है टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल था. डेटा साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल था. एंड वी कैन of course we can perhaps have another session to talk about these topics. I can share some real life experiences with you, but again thanks for raising this and we can discuss this maybe later as well. Yes, thank you for your question, Shamir, and thank you for keeping it brief, Mr. Ziad. Now Ruba can take over. Okay, this is a wonderful session, learning experience, even for me as a person who's, in the professional world right now. Thank you so much, Mr. Ziad, for taking out time for answering all the questions and queries of our students. Thank you, Ms. Amna, for moderating this session. Thank you, Ms. Sara, for arranging this session and, collaborating with all of us, bringing us on the same page. To all the students out there, I hope this session was quite bit helpful for you, and I would really appreciate it if you can write a brief testimonial about the learning that you had from this session and send it to me so that we can have more wonderful and more cooperative sessions in the future as well. And I guess that's about it. Thank you so much once again, everyone, and lovely interacting with all of you. Thank you. Thank you very much, and also apologies अगर कोई बीच में if I wasn't able to understand some of the things because कुछ आवाज की distortion थी कुछ जगहों पे, especially अभी last this question में भी कुछ वो था तो maybe I am not able to completely gauge, but nevertheless I really enjoyed as well. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Allah, shukriya. Thank you. Bye bye. Bye.